Hello everyone, this is Ibrahim Ahmed from the National Incubation Center, and I'm very excited to host a very special guest today in today's podcast of Detox. To be honest, I don't know how to introduce him. I am. If you see any mistakes, if I murmur any words, so please bear with me because it's just because of my excitement. One of the very good friends of the National Incubation Center, Islamabad, who also happens to be a very accomplished professional himself, who has not just was not just excelled in one particular industry but multiple industries. बहुत से लोगों के साथ लाखों लोगों के साथ काम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर, ना सिर्फ बिजनेसमैन के साथ या बिजनेसेस के साथ बल्कि कम्युनिटीज़ के साथ, ना सिर्फ बड़ों के साथ बल्कि बच्चों के साथ, ना सिर्फ गवर्नमेंट में, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के साथ बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी, टू अ पॉइंट एथलीट्स के साथ भी, स्पोर्ट्समैन के साथ भी. सो कोशिश करेंगे उनसे जान सके, कुछ गुड सीख सकें, कुछ बात कर सकें. So I'm very excited to introduce one of my mentors, I would say, someone I look up to. I think if I can become just 5% of what he is, I think I'll be living a really good life. So ladies and gentlemen, all the viewers of this podcast, I'm excited to announce and introduce to you our guest for the day, Mr. Azam Jamil. Thank you very much, Azam sir, for joining us. Thank you so much, Ibrahim, for having me. It's a privilege and an honor. बहुत शुक्रिया. प्रिवलेज एंड ऑनर इज़ ऑल आर्स सर, ऑल आर्स. सो लोग आपको बहुत सी चीज़ों से जानते हैं. दो चीज़ें आपकी स्टैंड आउट करती हैं, एक लाइफ और एक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म, राइट. मुझे अभी तक याद है कि किसी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था एक इवेंट पे कि इनका क्लेम टू फेम ये है that he has advised and consulted 6 of the Pakistani governments on tourism and hospitality, and you had a counter to it. I would like you to repeat it. So for our viewers. वो actually तारीफन मेरा तारुफ हो रहा था. They were introducing me as Azam Saab throughout his life has directly or indirectly advised 6 governments on tourism. तो जब मेरी बारी आई तो आई सेड भाई मेरी वजह शोहरत ये नहीं है कि मैंने 6 हुकूमतों को एडवाइस किया है. मेरी तो वजह शोहरत ये है कि इन 6 की 6 ने मेरी एक बात नहीं सुनी. सो या देखिए, the journey needs to be interesting. I've done many things, and even my children till very late were asking me कि above when will you decide what you want to do, and what you really want to do. Exactly. Okay. And देखें, मंजिल अपनी जगह, लेकिन रास्तों से प्यार होना चाहिए. And मुझे हमेशा रास्तों से प्यार रहा है. I've loved and enjoyed the journey more than the destination. Actually, the destination is very boring because once you get there, then the wind gets out of your sails, and you say, okay, now what? You've summited K2, where do you want to go? But if you keep trying and failing and trying and failing, then K2 always remains a dream. Yeah. And you have a purpose in life that you need to keep trying. So not that I've failed more than everybody else, but I have taught this and I believe this, that there cannot be any success unless you fail. Both these they go hand in hand like Jekyll and Hyde and Bonnie and Clyde. Failure and success are stepchildren of the same parent. Yes. Thank you very much for setting this tone, because I'll pick one word and I'll connect it with today's topic. So the word was a journey, the road, right? आपको रास्तों से अगर प्यार हो. And the entire objective of this particular episode is that we get to find those roads for us, and of course for the viewers of this podcast later as well. As you know, the National Incubation Center works with the startups, right? Yes. So they have a destination to, or if not destinations, different milestones to achieve. And of course they need a journey. They need to identify कि उनके क्या मंजिलें हैं, क्या रास्ते हैं, क्या hurdles हैं. So मुझे ये लगता है, that's my naive understanding, please correct me if I am wrong, कि उसमें एक चीज़ जो बहुत की रोल प्ले करती है वो आपका और मेरा या किसी का माइंडसेट है. सो कहते हैं ना, अगर आप यहाँ का ध्यान रख लो तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं. एज दे से योर बॉडी कैन बेंड, it's your mind you need to convince to, right? So what do you think, while we are trying to help the startups and also the viewers, कि वो अगर अपनी उस मंजिल के लिए जो भी उनका है
पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसका जो रास्ते का तयन करना है वो किन बेसिस पे किया जा सकता है? हाउ डू यू इवन, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह कारपेटेड रोड मिले टू योर डेस्टिनेशन। जो कभी कभी आपको शायद कच्चे रास्तों पे जाना पड़ेगा, खेतों से भी गुजरना पड़ेगा, कहीं पैदल चलना पड़ेगा। सो रिगार्डलेस ऑफ द कम्यूट कि आप क्या कर रहे हैं, what is, how can I determine कि यार this road or these multiple roads can take me to my XYZ destinations? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? What's the road map to it? देखिए इब्राहिम, life evolves, right? The rules that were 15 years ago are not the rules today, and they shouldn't be. Okay. And the rules that will be 15 years from now will not be the rules that are today. So life does evolve, and mindsets will evolve. What should not evolve is your guiding principle. Okay. So this is what I teach the youth, कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा जहन रोज़ अगर बदल जाता है, आज तुमने गिटार बजाना है, कल तुम कहते हो लानत भेजो मैंने ड्रम बजाने, 100 बिस्मिल्लाह. But the guiding principles should not change, and in this case, the guiding principle is love for music. Oh. Right. Similarly, when you are pursuing a career, and I teach this to young graduates, that your guiding principle has to be integrity. And integrity is not partial, it is not influential or preferential. It's either 0 or it's 100. You are either an honest person or you are a dishonest person. You cannot mold integrity कि यार मैं इससे सच बोलता हूँ, मैं इससे नहीं सच बोलता, मैं पैसे नहीं चोरी करता लेकिन मैं सॉफ्टवेयर चोरी करता हूँ. That's not integrity, okay? So integrity is the guiding principle. Passion, a word which is used so often and mostly misused, is also a guiding principle. The fact that you need to work hard is a guiding principle. I have not seen any successful person जिसकी झोली में आके कोई प्राइस बॉन्ड का नंबर गिर गया हो. Everybody has worked hard. And then another guiding principle for youngsters is, Ibrahim, that don't leave the house to make money. And my friend Iqbal Hassan, who was a very, very senior banker and consultant to the government and brilliant man, he always says, never leave the house to make money. If you leave the house to make money, you'll never make money. But keep all the other parameters in check. Passion, hard work, everything else, and guess what? Money will come. So money is a consequence of what you do. It is not that you paise kamane mein nikla hu. If you leave the house to make money, you're actually putting the cart before the horse, and it will never work. You'll end up chasing your own tail. So the guiding principles, Ibrahim, don't change. Everything else should change. When people like you interview me and say, is your son like you? I said, I hope not. So he said, but you are successful and people like you. I said, so should he be, but in his own way. He can't emulate me. And he's born 30 years after me. He has to be different. Yeah. His skill set will be different. His mindset will be different. So yeah, mindset is very important, but it's evolving. There is no right or wrong mindset. जो गलत है, it's like saying कि जी पैशन होगा तो काम करेंगे. भाई शादी के बाद भी मोहब्बत हो सकती है ना, तो पहले काम कर लो, शायद पैशन बाद में आ जाए. I am a perfect example. When I joined hospitality half a century ago, I didn't know anything about it. I was forced into it by Air Marshal Noor Khan. He said, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी कुछ नहीं. उसने कहा चलो काम शुरू करो. And before I knew it, I was with Intercontinental Hotels. In those days, the only chain in Pakistan. And then as I grew with hotel life, I became very passionate. The result is, if you ask me today that if I was to get another chance in life, would I do anything else? Not by a long shot. I'd still do hospitality. So just for the clarification कि जो आज़म साहब ने कहा कि शादी के बाद भी मोहब्बत हो सकती है, to the in arranged marriage के केसेस में बात कर रहे हैं, and to the same person please.
आप ये ना समझिएगा कि जी हमें आजम साहब ने कह दिया कि आप जो है, मुझे ना मरवा बिकॉज हम बहुत सिलेक्टिव होते हैं अपनी चीज़ों को प्रोसेस करने में. It's not what you say, it's what I understand, or Absolutely. perhaps what I want to understand. Absolutely, So with absolutely. the same person, with the same partner, you can fall in Yeah. love, right? No, I'll keep speaking and you keep clarifying. So that. So Azam bhai, thank you very much. So one thing आपने जिस तरह बात की ना, evolve, हर चीज़ evolve होती है, principles evolve होता है, guiding principles has to be the same, everything else evolves. Does that mean having a flexible mindset or perhaps a flexible way of seeing life or living a life, it can be also a guiding principle कि मैं rigid हो जाऊँ कि नहीं ये बस चूँकि मेरे 5 असूल हैं, तो फिर उससे मुझे ये लगता है कि शायद मैं लोगों को ना सुनूं कि यार आप कौन होते हैं बताने वाले, या flexibility in mindset, how important do you think? यार देखिए, is flexibility important as a part of your personality? 130%. Okay. Excellent, yeah. You cannot be a nice person if you're not flexible. Okay. Whether it's a guiding principle, I'm not an authority to say, but you're absolutely right. देखिए, because things are changing, you need to be flexible. अब ये जो change का लफ्ज़ बड़ा fashionable हुआ है, you know, people do courses on change management and flat. Yeah. Let me tell you, change is driven by 4 parameters. When you are hurt, Okay. you have to change. Right? When you see something, you are inspired to change. When you learn something, you want to change. And the last is that when you receive something, then you give to change. Because then you are able to change. तो इन 4 हालात में इंसान चेंज करता है. जब दुख पहुंचता है, when you are hurt, you are forced to change. You know, if you are the eldest son and your father passes away, and suddenly, from a carefree life, you are the de facto parent of that family. Yeah. So hurt or heartbreak will make you change. If you are amongst good people, that I had the good fortune to be, लोग कहते हैं सर आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैंने कहा सिर्फ एक तरीके से. I stood on the shoulders of great people. And they showed me the world. They were kind enough to let you stand. In those days, they were, because bosses and leaders held your hand. Sadly, that is also evolved, which shouldn't have. But मुझे पहली सुबह डांट पड़ती थी कि मैंने टाई गलत पहनी हुई है, कि ये टाई इस जैकेट के साथ नहीं पहनते. बिकॉज जैसे आप अपनी औलाद को डांटते हो, वैसे हमें डांट पड़ती थी. Today, if you're earning money for the organization, doesn't matter what you're wearing or which color tie you're wearing, as long as the bottom line is there. So hurt changes you. If you look at good people, if you are with good people, that inspires you to change. And of course, if you learn, then you want to change, because I've learned something. So change will happen, but it will happen because certain events take place in your life. And you are mature enough probably to realize that. Exactly. Because realization, I think, वो भी ज़रूरी है. By the amount of Ibrahim sunshine that enters your room depends on how many windows are open. Wow. If the windows are closed, it doesn't matter if it's sunny outside. You know, this is what, when I coach people, I said it doesn't matter how good a communicator I am. It doesn't matter at all. It matters of how much you have understood and benefited. So when people talk of communication skills, ये भी आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ा fashionable एक लफ्ज़ आ गया, communication skills का कोर्स करें. It's not about communication, it's about comprehension. Okay. That's the key. You know, I could be the best speaker on the planet. If the 10 kids I'm talking to have not understood what I've said, it doesn't matter if I'm the best speaker on the planet. But if they have understood, I could be a very moderate speaker, but the objective is achieved. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, that the windows need to be open, because everything around you is ready to give. Problem is you are not ready to receive. मुझे कंपनीज इब्राहिम बहुत पैसे ऑफर करती हैं कि कम एंड कोच आर मैनेजमेंट, एंड आई सेड कि आई फर्स्ट नीड टू चेक आर दे कोचेबल, एंड दे सेड व्हाट,
What difference does it make to you? You're getting paid. I said, if I find out that they are not coachable and I take money from you to try to coach them, to me that's a dishonest thing to do. That's where my integrity comes in. कि मेरी कोचिंग से इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने वो नहीं करनी, चाहे जितने मर्जी मुझे पैसे दें. कोचिंग की आपने बात की, तो आई थिंक आई पर्सनली नो एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ माई आर व्यूअर्स माइट नो इट एज वेल, वन ऑफ योर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. पर उस पर बात करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ सो वी कैन हैव बोथ आंसर्स. आपने जो हम भी जब स्टार्टअप्स के साथ काम करते हैं, आई एम श्योर आप भी करते हैं, जब आपने भी बात की पैशन की बात की कि बहुत मिस यूज वर्ड है, ओवर यूज वर्ड है. बट एक तो चले लेट्स से मुझे पता या आपको पता था कि हॉस्पिटैलिटी आपका पैशन बाद में बन गया, या मुझे था कि मैंने L&D में जाना है. बट व्हाट इफ़ आई डोंट इवन नो, क्योंकि जब हम ये तो बात करते हैं जी पेरेंट्स की वजह से नहीं कर सके, सोसाइटी की वजह से नहीं कर सके. बट व्हाट इफ़ मेरे पेरेंट्स कहें कि हाँ भाई तूने जो करना कर ले, आई हैव नो इश्यूज़, बट क्या करना है, एंड देन आई हैव नो आंसर. तो फिर मैं कैसे कन्विंस करूँ? तो मेरे लिए आसान है मैं बाहर जाके विक्टिम प्ले करूँ कि यार बड़ों ने नहीं करने दिया, दोस्तों ने नहीं करने दिया, मजबूरियाँ, सो ऑन सो. बट अगर आप पूछें ऑल्टरनेटिव क्या, वो नहीं है. सो माई क्विक क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी आइडेंटिफाई पैशन? इज देयर एनी गूगल मैप डायरेक्शन जर्नी टू इट? A. B. Then I would like you to connect it with this with your one of your students कि उसमें पैशन के साथ साथ क्या चीज़, क्या हंगर होनी चाहिए. देखिए, it's a very valid question. First of all, that's why I keep screaming that you must have mentors and coaches. हम mentors और coaches से allergic हो चुके हैं. We don't like people coaching us. How often have you heard this phrase? इसको देखो, जुमा 8 दिन हुए मुझे बता रहा है. So हमें, क्योंकि that desire to learn has diminished. Why are our windows closed? Because ego has taken over. Okay. And you feel that if I ask somebody, the most courageous word that you can use from the English dictionary, you know what that word is? What? Help. Okay. I need help. That requires so much courage. This doesn't require courage कि हट जाओ जी मैं टीपू सुल्तान हूँ. इसमें क्या करेज है? करेज तो है कि यार मुझे मदद की ज़रूरत है. And people who have approached me in my last 45 years and said, I need help. And that includes Pakistan's cricket captain Babar Azam, who said, I need help. How can I not respect that individual? How can I not give my life to helping him? Because उसकी एक need है. तो mentors और coaches इस passion को develop करते हैं, to answer your question. And it is not uncommon. 80% of our youth doesn't know what their passion is, and it's nothing bad in it. 80% of European youth doesn't know what their passion is. एक दो लोगों के पास पैशन होते हैं. You see the जुनैद जमशेद्स and you see the इमरान खान्स and you see कि यार ये देखो जुनूनी लोग हैं. But these are a very small handful. Majority people don't know, and therefore what NIC does in terms of career counseling क्या है? Passion development का एक process है ना. आप एक बच्चे को बैठा के कहते हो कि यार तुमने ये पढ़ाई की है, ये उसमें possibilities है. So a lot of times people are told about their passion. A lot of times people learn as they go along. वो क्या होता था? Pay as you go, right? And I tell students, I said, if you have to work for 40 years, right, in an average life, I give you 10 years कि जहाँ मर्जी मुँह मारना है मारो, धक्के खाओ. 10 नौकरियाँ चेंज करनी है, you have 10 years. 10 years is a lifetime. After your first 10 years are over, you should have decided, okay जी, अगले 30 साल मैंने इस काम में लगाने. So 10 years, nobody is going to hit the jackpot in their first attempt. So you join a big multinational, even if it's a very well-known multinational, you may very well join it and not like being there, and you will leave that job. So I said, ठीक है, 10 साल मैं दे रहा हूँ, जो चीज़ कोशिश करनी है, बिजनेस करनी है, ये करना है, वो करना है, करो. लेकिन 10 साल के बाद, that's a long time. You should
now say कि okay, I've tried the waters, I've tried this is what I want to do. And once you decide to do that, then do it. Then connected with this, Ibrahim, people say कि नौकरियां तब्दील करना बुरी बात है, बिकॉज आजकल का ट्रेंड है कि जी अगर आपने ग्रो करना है तो नौकरी तब्दील करोगे तो देयर इज नो हार्म इन चेंजिंग जॉब्स. माई ओनली पॉइंट दैट आई नीड टू मेक इज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चेंज करियर्स. करियर और नौकरी में बहुत फ़र्क है. If my grandchildren today ask me, Nana, what were you? I said, I'm a hotelier. That's my career. उस होटलियर की ज़िंदगी में मैंने 5 होटलों में अगर नौकरी की है जो मैंने नहीं की, अगर मैंने की भी होती तो आई स्टिक टू होटल्स. जब मैं होटल में काम करते करते अगले दिन सिम कार्ड बेचना शुरू कर दूंगा और उसके 6 महीने बाद मैं जूस बेचना शुरू कर दूंगा, so my skill set doesn't develop, and after 40 years I'm a confused person. I've made money and I've had all the authority and the cars and everything, but my skill set is not developed. So I tell kids that change jobs, there's no harm in it, but be careful before you change careers. और career और job को अलग अलग रखना. Azam, we have had discussions on passion, profession and all those things. एक सवाल आपने किसी से एक दफ़ा पूछा था, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ. मुझे और मेरे देखने वालों को ज़िंदगी गुजारने का कोई रास्ता आई विश आई न्यू. देखिए ज़िंदगी मैंने कैसे गुजारी जाए, क्या किया जाए ताकि ये बाकी चीज़ें जो फाउंडेशन तो वो बन जाएगी और बाकी चीज़ें उस पर फिर पजल सॉल्व हो जाएगी. यार देखो, ज़िंदगी गुजारने का जो फाउंडेशन है ना इब्राहिम, दैट इज़ ह्यूमैनिटी. Now I'm probably sounding like an old baba कि जब इस उम्र में पहुंच जाते हैं इस किस्म की बातें शुरू कर देते हैं. I have been saying this when I was 28 and I've been involved with people and community since I was young. मैं उस ज़माने में जाके फलाई काम करता था where it was not fashionable. It was fashionable and I had long hair and I used to play the guitar and I used to be a celebrity, and I still used to go to the impoverished and the vulnerable and help them. And then I had the good fortune of joining the Aga Khan. And the Aga Khan network is based on looking after the impoverished and the vulnerable, and they told me how to do it. I learned, although my responsibility was Serena Hotels. But other than what you're doing, they teach you to be a human being also. The humanity जो है ना, इसका पीछा नहीं छोड़ना. बाकी ups and downs आते रहेंगे इब्राहिम. I wish I had a formula to tell you if you do A, B, C, everything will be fine. It will not be. Sorry, might play devil's advocate here. If my survival is at stake, if I have survival issues, how would I put humanity above me? You will not. Then what should you will not. Then your survival is more important. So that I can choose. Absolutely. But I should not confuse कि every situation is my भाई मैं जब लोगों को समझाता था कि रेड लाइट पे गाड़ी रोका करो, तो जो कराची के बच्चे होते थे कहते थे जी जहाँ मैं रहता हूँ मैं रात के 2 बजे रोकूँ तो वहाँ मेरा मोबाइल छीन के ले जाते थे. टू हिम माई आंसर वॉज कि वहाँ रोकना गुनाह है, वहाँ नहीं गाड़ी रोकनी. बट ये दिल की ईमानदारी से बताओ कि जो 15 ट्रैफिक लाइट्स को तुम ब्रेक करते हो, उन 15 के 15 में यही डेंजर है. जहाँ डेंजर है वहाँ मत रोको, लेकिन जहाँ डेंजर नहीं है वहाँ तो रोक लो. सो डोंट यूज वन इंसिडेंट टू कवर अप व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग. एंड यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स अब हम, ये तुम्हारी सवाल से कनेक्टेड है, हम जाके एनवायरनमेंट की कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को पहाड़ों में. यार उनके पास खाना नहीं है इब्राहिम, हम कहते हैं लकड़ी ना काटो, ये दरख्त नहीं काटना, बुरी बात है. वो कहता है मेरे बच्चों को रोटी कौन खवाएगा. सो द इशू इज, तो मैं उसको क्या कहूँ कि नहीं बच्चे भूखे मारते लेकिन तूने दरख्त नहीं काटना बिकॉज मैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टर हूँ. यू नीड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट वे. जब आप यहाँ पर पढ़ते हो ना नो पार्किंग, तो मैं पूछता हूँ ठीक है जी मुझे बताओ मैं कहाँ पार्क करूँ. इट्स वेरी इजी टू राइट नो पार्किंग ना, बट यू नीड टू टेल पीपल कि यहाँ नहीं पार्क करना. वलायत में, यूरोप में क्या होता है, कहते हैं जी नो पार्किंग, वो पार्किंग है, उधर जाके 50 पाउंड दो और पार्क करो. हमने जब नो लिख दिया तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया. तो वी नीड टू टेल पीपल कि व्हेन देयर
And survival, human survival, is instinctively your first priority. Yes. Instinctively. And it's most powerful instinct. Of course, bilkul. And that you can't ask anybody. It's unfair to ask people कि तुम अपनी survival को compromise कर दो और तुम कहीं और जाओ. अब ईदी टाइप बंदे तो नहीं है ना. वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. जिस तरह उन्होंने कहा, अगर आपको याद हो, जो एयरप्लेन पे भी अनाउंसमेंट होती है कि पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को पहनाए. पहले आप सरवाइव करेंगे तो दूसरे को करेंगे, बजाय इसके कि दोनों ही उसके. एब्सोल्युटली. सो थैंक यू वेरी मच आजम साहब. आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने सुबह टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक वी कैन हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. But do you think, including thoughts, do you have one thing that you feel that greatly helped you change your life, or climb those ladders? If yes, if you can share with the only thing people ask me this. We have heard about humanity. We have heard about guiding principles. We have heard about enjoying the manzile and the rasta, then the destination. देखो, मेरे से ये सवाल बहुत पूछा जाता है, एंड जो मेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस और मंतक है ना, उस पर मैं कहता हूँ यार कि जस्ट डू द बेस्ट यू कैन एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबॉडी एल्स. इब्राहिम शुड नॉट बी ट्राइंग टू बिकम आजम जमील एंड वाइस वर्सा. यू नीड टू से कि ये मैंने काम किया है, इज दिस द बेस्ट आई कुड डू. And 80% of the time you'll realize that this is not the best you could do. Because you're competing with the wrong people. You need to be competing with yourself. So I tell everybody, yeah, just do the best you do. When I get into the kitchen, and I get into the kitchen when I cook, there's nobody watching me. And most of the times I'm making that food for myself. But you have to see me to believe me how passionate I am trying to make that dish. It could turn out to be horrible, but I try to do the best I can. And if you can answer this question to yourself honestly, कि ये जो मैंने काम किया है, मैंने अपनी काबिलियत के बारे में बेस्ट किया है. If somebody invites me to play a cricket match, I can't become Wasim Akram. I just have to be a better bowler than Azam Jamil. So अगर आपने वो किया तो इसका मतलब you are doing reasonable. I think if you keep doing that, success will come your way. It may not come tomorrow morning at 9 o'clock, but it will come your way. Yeah, ये तो अल्लाह ताला का वादा है भाई. अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो, फिर मैं उसमें मदद करूँगा, मैं अजर दूँगा. But we need to, diligently work hard. Thank you very much. Very insightful discussion. So guys, guiding principles, enjoy the journey, not the destination. You can have multiple destinations. Passion, how to find passion, and getting the right coach and mentor. In fact, looking for it, having the hunger, जिस तरह उन्होंने बाबर आजम की example दी, are few of the key takeaways from today's podcast. I hope you enjoyed the show. Detox, this is Ibrahim Ahmed signing off from Detox, the National Incubation Center. Thank you very much.